Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will learn difference between hardware and software. Hardware and software. As we know that every computer system consists of two parts, or we can say that computer is made of two basic parts: hardware and software. Hardware are the physical parts which can be touched, which can be seen, while the software are those parts of computer system which are logical in nature, like human body is hardware while human soul is software. Without soul the human body cannot do anything, just like is the case with the computer. So software run the hardware. Computer hardware refers to the physical parts or components of computer, such as monitor, keyboard, mouse. These all are hardware which can be touched. Motherboard. That enable the computer. Software refers to the set of program or instruction that run the hardware. सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर हार्डवेयर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वो काम नहीं कर सकता. So combination of hardware and software form a usable computing system. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन मिलकर एक यूजेबल कंप्यूटिंग सिस्टम बना सकता है. अगर सिर्फ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, इसलिए दोनों का होना लाजिम व मलजूम है. Now what are the difference between hardware and software? Hardware refer to the physical components of the computer required to store and execute the software set of instructions that enable user to interact with the computer. अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, राब्ता नहीं कर सकते. इट इज़ फिजिकल इन नेचर, बिल्कुल इसका जिस्म है, हार्डवेयर का जिस्म है, टच हम कर सकते हैं. इट इज़ लॉजिकल इन नेचर, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, इंस्ट्रक्शंस है. Hardware understand only binary data or digits. 0 1 is in the form of voltage pulses. As we know that computer can only understand 0 1 machine language. Software tells the hardware everything in the form of binary data or digits. Software hardware को बताता है सब कुछ, instructions को देता है in the form of binary data 0 1. हार्डवेयर के टाइप्स क्या है? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस. दीज ऑल आर द हार्डवेयर, फिजिकल इन नेचर. टाइप्स, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर स्टार्ट फंक्शन वंस सॉफ्टवेयर इज़ लोडेड. बिल्कुल, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क पे मौजूद नहीं है सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता, हार्डवेयर फंक्शन नहीं कर सकता. Software include the program that run on the hardware, such as Microsoft XP is the software that make the computer functional. बिल्कुल, XP, Microsoft XP is the window, is the operating system software which runs the computer. हार्डवेयर फाल्ट्स आर फिज़िकल. हार्डवेयर में अगर गलती आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए तो फिज़िकल है, उसको फिज़िकली ठीक किया जा सकता है. सॉफ्टवेयर फाल्ट्स आर लॉजिकल विच कैन नॉट बी सीन. Example, monitor, printer. These all are the example of hardware. Scanner. Example, window, word, excel, games, graphics program and much more. These all are the software.